Topic of discussion of today is effects of income inequality and poverty in society. What are the effects income inequality के कारण, poverty के कारण society पे क्या-क्या effects आ रहे हैं, right? Now this topic might seem easier to you, and I don't know, it's tough for you. Just can you repeat the topic again? Effects of income inequality and poverty on society. So you are giving two dimensions. One is there is income inequality. There are some wage workers who are not paid good. There is a stagnant, you can say you're earning at a very stagnant level, right? So inequality over here, richer is becoming richer, poor is becoming poor, right? More poor. So how the statements you are justifying it out. Poverty hai, us cheez ka society pe kaise impact aa raha hai? What is the impact? Right? Are we able to grow? What are the dimensions? India developing se develop ban pa rahi hai, nahi ban pa rahi hai. Well, I'm trying to give you some of the ideas. उसी तरह से different dimensions पे जाना, ठीक है? I'm starting your 2 minutes. Any queries before I start your time? Topic clear है? कम से कम अभी नोट करोगे 10 pointers याद रखने चाहिए कि मेरे पास 10 होने चाहिए. I should not be short of the ideas, and more it is about giving new ideas in it. Effects कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, किस किस चीज में effects पढ़ रहे हैं. मैंने कल भी बोला था, टारगेट करा करो एरियाज को. अब हिंट के लिए इकोनॉमिक इफेक्ट्स कैसे पढ़ रहे हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लॉट्स ऑफ राइट इफेक्ट्स राइट गोइंग ऑन. ओके, think about it. I start your time and take your 2 minutes wisely. Yeah, everyone ready? Yes. Already? Okay, who's going to start with the introduction one? Ma'am, I would like to start introduction. Aditi is with introduction and conclusion. Who wants to go? Hemant or Gajraj? Hemant, go for conclusion. Gajraj is for the first time. Okay. So listen attentively, and when I say stop, then only you can stop your ideas, right? Till then, think about different dimensions. Aditi, go on. Start. Okay, sure, ma'am. Okay, good afternoon. And the
and I am glad to start the today's conversation. The topic for today's conversation is effect of inequality and poverty in society. I think this topic is very relevant to discuss, and effects of inequality and poverty in society are increasing as rich people are getting more rich and poor people are getting poor. So uh, this can be a this can be a bad effect also at the same time. So I would like to invite all of you to start the discussion. Yeah, I would like to add a point like because of this income inequality and poverty in the society, many of the people are have lack of limited access to the quality education, especially because the people who come from the low income communities, they lack from adequate educational resources actually. So they join the schools where teachers are unexperienced and they don't get sufficient knowledge from the school. So the likewise their future is getting damaged because of this limited like how to say in less income. And another thing it was facing was like health issues related to health actually, because of income inequality, like low kind of income, people are not getting sufficient health benefits. Like if there was a treatment which cost more than their bearing capacity, they are not going beyond that. So that was, it is creating the health issues for them also. And the main point which was there was crime rate, because of this income inequality and kind of poverty which was facing by the Indian citizens, and some the crime rate was increasing, like theft was increasing there. We can see in nowadays in the society, like many of them are grabbing chains from the women, and they are going into homes and stealing the money, and they're going into temples and stealing the money from the temples. It's only because of this kind of thing it was happening. And people are not and so that's my point actually. In my opinion, I would say yes, effect was there because of this income inequality. The effect was there, and poverty, because of this poverty also, people are facing some kinds of effect, and crime rate and this kind of things was increasing. So that's my opinion about this topic. Yes, Heyman, I agree with you. You said all the issues that causes because of the income inequality and poverty, and these all issues are increasing nowadays. So I would like to say some causes why this inequality and poverty in society is starting. So main first reason I could think is corruption, because rich people are there. The corruption is also in high rate. Corruption can cause rich people to get richer and they create their monopoly in the society, and poor people are not getting advantages. So because of that, so corruption can be a cause for for income inequality and poverty. And the rich people are monetizing the society. So there is a lack of opportunities for poor people also. Another reason I could think of it is less employment wave currently, due to COVID and after COVID. There are so many jobs that are closed, and this is reducing the employment. So poor people are getting less opportunity to develop their knowledge and showcase their talent. So this can be another cause for income inequality. So they can't get educate themselves, and also they can't go to jobs so that they can pay and earn for families. So this can also be causing income inequality. These are my causes of these effects. यस आई Yeah, थिंक अगर इस प्रॉब्लम की वजह से जैसे अगर इनकम कम है तो उसको हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई जॉब ले सकते हैं, उसके लिए हमें एक हायर एजुकेशन चाहिए। बट अगर मतलब हायर एजुकेशन अवेलेबल ही नहीं होगी, बिना अगर हमारे पास उतनी मनी नहीं है तो हम कहीं जाके बाहर जाके पढ़ नहीं सकते, तो वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और इसकी वजह से अगर हम एजुकेशन नहीं मिल पाएगी अच्छी वाली, तो हमें जो एक सुविधा मिलती है जो सरकार के द्वारा कई सारी स्कीम आती है उनके बारे में नॉलेज भी नहीं हो सकती, क्योंकि करप्शन बहुत है। जैसे अभी बताया, अदिति ने अभी बताया कि करप्शन की वजह से वो जो ऑफिसर्स हैं उनको नीचे तक आने ही नहीं देते, मतलब उन चीजों को। तो वो एक जो पॉवर्टी लाइन वो नीचे ही जा रही है, मतलब गरीब पुअर पुअर ही हो रहा है।
Yeah, even I would like to add some point like because of this kind of globalization and advancements in the technology, nowadays even industries want high skilled people. Like they need more people who have more kind of skills for their industries. This is leaving low skilled workers. This is the main disadvantage of income inequality also because of this kind of technological advancements. And also I would like to add one point. I don't know, it's called tax system in India. See, in India, tax system is like it is same for every people. So the people who has less income also need to pay more amount of tax. So this is also creating a burden on the families and everything. So the people who had more money, they can pay the tax actually, but the people who had income very less, they can't able to pay that much amount of tax. This is also creating an income inequality. And also because of this kind of poverty and income inequality, there is a lack of skills and education among the people. So that was also the my point. I just as we know, nowadays we are filling forms of many educational institutes and for jobs, and there is a section called EWS, which is economically weaker section. But when we have to pay the fees, the economical weaker section also have to pay the same fees as general category and all the categories. Means economical weaker section, the name itself is economically weak, but they also have to pay the same fees. So this is like economical weaker section are not getting any benefits so that they can improve their their payments and everything. So this can be an example also. And also pay income inequality is not only between poor and rich, it is also a case between men and women. Like recently Priyanka Chopra also said that she has not even get any single paycheck with the same amount as her male co-star, but now she is getting the same paychecks as her male co-stars. So development is there is an development in improving income inequality, but government, and not only government, the people also have to increase their knowledge and support poor peoples to get them educated, help them to decrease this as much as we can. यस आई थिंक इसके लिए जैसे अभी अदिति ने बताया ईडब्ल्यूएस के बारे में, मुझे लगता है उसके लिए सरकार को एक अलग से गवर्नमेंट को उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, उनके लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड जो एसेंशियल नीड है उनकी, जैसे एक हेल्थ हो गया, क्योंकि ये ऐसी हैं जो सबको मिलनी चाहिए बट उनके पास वो अवेलेबल है। हेल्थ, एक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एजुकेशन वेल एजुकेटेड है तो कहीं भी नौकरी कर सकता है और उस चीज से बाहर आ सकता है। Yeah, So now even I would like to add in terms of like EWS session. Yes, government was introduced EWS session. That was a great initiative. But as Aditi said, the fees were the same for each and every student. I feel even the government also should involved in this. Like the people who are with come some kind of having EWS certificates or something, and their fees should be some kind of reduced so that they can bear that fees and they can get the education. And because if you have EWS and the fees was also same, there was no point of that EWS session actually. So to reduce this kind of inequality, I think even government needs to change the fee structure of colleges also in regarding this actually. yeah, this is true. Now I would like to I would like to discuss some ways to solve the income inequality and poverty in society. So the first way I would like to discuss is uh, create more employment. First thing, so that every people can get job, everyone can showcase their talent and get paid on their interest of job. Second thing I would like to discuss is education. Yeah, education plays a very important role to getting, as we all know, without education there is nothing. So education should be at the least cost as possible, so that every person can educate himself or herself to get ready for the jobs. And next I would like to discuss about health. There should be some health concessions for the poor people, so that the immediate so that the sudden health issues
they can resolve it in a very less cost, and they will not get burdened because of the because of the payment they have to pay at the hospitals. So these are some ways from my side. Yeah, even And I would like to add some point like there should be progressive tax and redistribution. So tax Yeah. should be like payment of tax should be progressive so that the excess amount which would get from the people who had more money can be progressively distributed to the people who had less money so that they would also get benefit actually. And also there is there should be, as Ati said, that one of the heroine Priyanka Chopra was getting same kind of amount. Even that kind of there should be gender equality uh, 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 should be there for closing the gap between them. So even that gender should get the equal amount of pay. It should based on the skill only. And Ati also said that there should be more kind of jobs. I think I can agree in two ways. Even I disagree in that point also. Even industries are creating more kind of jobs also. Even industries are looking for the more kind of skilled people. They are not looking for the people at least who had less skill. They are aiming for the high skilled people even though they had jobs. So I think in this scenario, industries also should change with some kind of operation. See, they should have some kind of proportion, the job should be like the person who had more skill should have some kind of proportion in the seat, and the person who had less skill should have some kind of proportion. If this proportion was maintained by the industries, so everyone will get a equal opportunity. In nowadays industries are not maintaining this kind of ratio. They are maintaining high amount of seats who has more kind of who has high skills, but low skilled people are getting disadvantage for this. So there should be ratio maintained. In my opinion, industry should maintain a ratio so that everyone gets an equal opportunity. आई Yeah, थिंक जो I हेमंत ने agree with बोला, you. क्योंकि इंडस्ट्री जो हाई स्किल मांगती है उसके लिए हमें पहले हाई एजुकेशन मिलना जरूरी है। तो आई Hmm. थिंक इसको रिजॉल्व करने के लिए सरकार कोई स्कॉलरशिप के लिए कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए जो इस तरह कैटेगरी के लोग को दिए जा सके, ताकि वो पहले हायर एजुकेशन मिल सके। और एजुकेशन होगी तभी हमारे पास मतलब स्किल मिलेंगे हम, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। I think government is also trying on improving such things, because the budget given this year are more related to economically weaker section, so that, as Hemant said, the taxation. So government is trying to work upon these issues. Government is also trying to give scholarship, as you said, Gajraj. So there are more things to be done, and there is vast scope to improve on these levels. But it's not like uh, we are developing now. I think we are in developing stage, but not yet completely developed. So there will be some time gap, and this the time gap is now, I think. So we are improving, I guess. आई थिंक अभी अदिति ने जो बोला, जो स्कॉलरशिप चल रही है, बस आई थिंक जैसे और भी कई सारी जो गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, जैसे सिलेंडर के लिए वो कुछ उसमें से कुछ कम करती है, उनके लिए पैसे कम करती है, बट उन लोगों को पता ही नहीं होता है। तो एक Hmm. जागरूकता नहीं होती है आई थिंक। तो उसके लिए भी True. मतलब कुछ उनको बताया जाए कि किसी तरीके से कि मतलब स्कीमों के बारे में। तो Even I Yes. would like to add some kind other point every people can't afford high skill jobs also. So in my opinion, entrepreneurship should be developed among the students so that they can start their own business, whether it can be small business or large business, not a point. But entrepreneurship skills should be there with if it is learned, they can start their own business. It can be running a shop and like homemade business, like making of some kind of home things also. If this entrepreneurship was taught to the people who had low kind of skills also, then it could be improved. Then economic inequality also can be improved by this. Yes, I agree with you. The awareness of, as Gajraj said, the awareness is less, so the awareness of entrepreneurship is also less. Yeah. But now, because of the shows like Shark Tank and people getting to know the entrepreneurs, it is a way of entrepreneurship. I think this way we starting from now. There will be more entrepreneurs created from this era.
So this will be benefited so that everyone can create the job for themselves. This can be a better way to improve income inequality. आई थिंक इसके लिए एक और चीज है जो हम बात कर रहे हैं कि उनके लिए अवेयरनेस होना जरूरी है, जो भी स्कीम चल रही है, बट उसके लिए हमें लाइक जो रिमोट एरिया है तो वहाँ पे तो इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं होता, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जैसे आजकल तो जो विलेजेस में तो मतलब रोड भी नहीं होते ढंग से, तो कई सारे जैसे टावर की एक बहुत ज्यादा जरूरत है, इंटरनेट पहुंच सके, रिमोट एरिया पे इंटरनेट ही नहीं अवेलेबल है। Yes, I agree. So What are the points? No one left with any point. Any point you guys are left with? Okay, go from the conclusion. Who wants to conclude? Like, thank you everyone for participating in this group discussion. I think this was a great discussion, and we discussed many valid points regarding the topic effects of income inequality and poverty in the society. Some of our friends, firstly, in this discussion, we discussed the causes of the inequality, and we come to the conclusion like how to prevent this kind of thing. Some of our friends discussed like because of less income, there was an income inequality, and because of this kind of less income, health issues were creating in our India. That was a thing, and crime rates were increasing because of this kind of inequality. So, and the causes for this inequality also were discussed, like because of lack of education skills among the people. So, and we came to conclusions like government should take an initiative in terms of tax redistribution also. And somehow, and Gajraj said that a scholarship should be encouraged to the students. That was also a great point. So, thank you for everyone participating in this discussion. Now see, the discussion, there was one improvement that you were able to speak today. Aditi had points, Hemant had points. Gajraj, it's your first time, so it will take time. 1, 2 GDUs you have to attend. After that, there will be improvement, right? So since yesterday, if I compare, there was improvement. लेकिन अब मैं बताती हूँ content जो था, it was not good. Very validly, I'm speaking it out, and I'll tell you the drawbacks. Aditi, 12 बजे लगाया था आज GD? हाँ मैम. उसमें you are able to participate in that? Good. Medium. Medium. Right now it is medium 1. So what was the feedback? In the morning only you attended. What feedback you got? Sir said you should speak more. Okay. Now there is one mistake which I want to highlight before I jump on the topic. Topic क्या था? Can anyone speak the topic for me? Income inequality and poverty in the society. इसका क्या था? Role, है ना? Yeah, role of था ना नेम स्टार्टिंग में. किसी ने बोला अपनी ग्रुप डिस्कशन में, जब अपनी आई थिंक अदिति स्टार्टेड इट आउट, देन हेमंत टोल्ड, बोला इल इफेक्ट है, नेगेटिव रोल है. एक इंसान ने बोला ये चीज एडवर्स इफेक्ट है. जो टॉपिक का नाम था उस पे डिड यू स्टार्ट दैट यार द डिस्कशन वी आर गोइंग टू दिस, इसमें तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं है कि भाई सैलरीज का नहीं है. इट इज इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, दो चीजें हैं. पॉवर्टी किस किस तरह से आपको इम्पैक्ट करती है हम सोचते हैं. सबसे बड़ा ये पैसे का बात है. इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेगनेशन है. इकोनॉमिक की वजह से हमारी इंडिया डेवलपिंग में जा रही है, डेवलप हो ही नहीं पा रही है. ये तो हमने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कर दिया. और क्या होता है, जो लोगों को है सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही है. ये हमने कोरोना टाइम से भी देखा था, लोगों को भागना पड़ा था ऑल ऑफ अ सडन. क्यों? क्योंकि ना उनके पास क्या थी, पॉवर्टी की वजह से कोई स्टेबल कुछ इनकम सोर्स ही नहीं है, और कोरोना से और लेट डाउन हो गया. ये तो था इकोनॉमिक. सोशल में बताती हूँ, आपस में आप लोग बैठते हो, यू गाइस सिट टुगेदर और यू गाइस टॉक टू ईच अदर. डू यू really even you are so much educated, do you really go and sit with the low class people socially? You talk to them, you enjoy your parties with them, or you enjoy your parties with the same poverty group, मतलब कि income group के साथ enjoy करते हो. अपने सेम लेवल पे करते हो ना, सेम या ऊंचे लेवल से. नीचे लोअर क्लास में जाके कोई भी नहीं करता होगा. Can anyone go today? I spent my whole day with the carpenter because he was just working it out, और मैं बहुत अच्छे से enjoy करा. सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, हमारे सोशल ग्रुप्स बन रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से ये पॉइंट हाईलाइट किया.
जो चीजें एक्चुअली में दिखती हैं, जाओ बाहर जाके देखो, इंस्टा पे रील्स डालते हैं लोग, है ना, आज बर्थडे था, हमने क्या किया, पिज्जा पार्टी की, पुअर लोगों को वेलकम किया। इट इज वंस इन अ वाइल एंड दैट टू शो ऑन इंस्टाग्राम, राइट? डज इट रियली हैपन एवरी डे? इट डज नॉट। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक वाइज आ रहा है, सोशल वाइज आ रहा है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में भी क्या करते हैं जो पॉलिटिकल, जब इलेक्शंस आते हैं तो यू नो लाइक ये इनकम, लो इनकम ग्रुप को टारगेट कर लिया जाता है, बाद में उनको उनके बारे में इंप्रूवमेंट्स होती है कुछ भी। कल भी मैंने बोला था पर्सपेक्टिव देखो, मैंने बोला भी स्टार्टिंग में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये वाले ऐसे पर्सपेक्टिव्स पे जाओ, इससे ही आपकी तीन तीन डायमेंशंस चलती हैं। बोला, किसी ने नहीं बोला कि इल इफेक्ट्स है, एडवर्स इम्पैक्ट है और हमारे पास बहुत नेगेटिविटी जा रही है। हमारा क्या है, अब वो पहुंच गए तुम लोग कहाँ, प्रियंका चोपड़ा पे, सैलरी उसकी पता कहाँ है, इनकम कितनी चल रही है, उसको वहीं भी मिल रही ना उसके वॉइस के बराबर, तो इट इज ओके। अभी हमारी बात हो रही है सोशल इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ, आपने बोला रिचर इज बिकमिंग रिचर, वो पहले ही रिच है, उन सेक्शन को छोड़ दो, हमने रिच और पुअर सेक्शन पे जाना है। कैसे जानेंगे इनइक्वालिटी क्या है? वेज वर्कर्स आते हैं हमारे पास, दिहाड़ी के लोग आते हैं, हमने फिक्स की हुई है 500 रुपए पर दिन, 600 हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। इनइक्वालिटी, वो जितना पूरा दिन काम करते हैं धूप में, उनको उतना मिलता भी नहीं है, उनको भी कई लोग देते ही नहीं है, बाद में सैलरीज ही नहीं देते हैं, कोई पता है, बच्चों से काम करवाते हैं अंडर 14, देयर हैज बीन एक्ट्स। सरकार पे मैंने बोला था हिट करने से पहले ना, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के बहुत फॉर्म्स है, इसकी कम है, अदिति ने मेंशन किया ना, ईडब्ल्यूएस के फॉर्म्स का बहुत फॉर्म्स है जिसमें ईडब्ल्यूएस की फीस बहुत कम है, ओनली जनरल की ज्यादा है, तो वो हम नहीं पॉइंट कर सकते हैं, दैट इज नॉट, आई टोल्ड यू, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे मत पॉइंट उठाओ कि हाँ ये वाले टॉपिक पे, सरकार के टॉपिक पे, सरकार के तो छोड़ ही दो। हाँ ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इन मोर मॉडिफिकेशन, अभी भी चल रहे हैं पर इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं प्रॉपर लॉज। अभी भी हम 14 साल के अंडर बच्चे देखते हैं जो कि अपने फोर्सफुली करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनके 10-10 बच्चे होते हैं, क्यों? ताकि वो अर्निंग सेक्शंस बढ़ सके उनके, उनको अवेयरनेस, उनसे एजुकेशन, हेल्थ, ये चीजें आपने मिस कर दी सबने, मेन क्रक्स तो मिक्स कर दिया। बातें कहाँ कर रहे हो, मैं वही तो देख रही हूँ कि किसी ने कोई वो पॉइंट ही नहीं बोला। आई वाज मेकिंग नोट्स व्हेन यू वर टॉकिंग ना, व्हेन 2 minutes आर देयर, इवन आई मेक माय नोट्स कि क्या क्या हमने डिस्कस करना है, ताकि ये हो कि हमारा बैलेंस चले टाइमर का। एंड दैट इज ऑल अबाउट, आई वाज मेकिंग एन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन्फ्लेशन हो रही है इस वजह से। इन्फ्लेशन कैसे हो रही है? पैसों की वजह से भी हो रही है, रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, कईयों के रेट कम हो रहे हैं, है ना। कंज्यूमर मार्केट ही खत्म हो जाएगी अगर सपोज करो, सिर्फ कई होते हैं अब ब्रांड्स होते हैं, अब talk about Zara or something very, you can say, luxurious brand or something, Burberry and all that. We get the, you can say, you can get it out, पर हर दिन जाके आप नहीं खरीदते होगे, not every day, ठीक है। कईयों की हर दिन की आदत होगी कि कोई लग्जीरियस ब्रांड, और now I'm not able to remember any luxurious brand, you guys know it better also। तो उसमें क्या आ जाता है उस ब्रांड्स का भी, कि वो ब्रांड्स बने हैं सिर्फ रिचर ग्रुप के लिए बने हैं, जो अगर आपको बोला ना चुप कई आ जाते हैं, उनकी कंज्यूमर मार्केट क्या है, छोटी है, कंज्यूमर मार्केट को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से टारगेट करो कि किस किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। जब भी टॉपिक होता है, फर्स्ट लाइन शुड बी दैट देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, यू कुड नॉट मेंशन देम, देन यू हैव टू डील इट आउट। अदिति और हेमंत, एक नेगेटिव आई एम टेलिंग यू नाउ, when you put your point, okay, Aditi, your confidence was good, you were trying to make it good point, but वो नेगेटिव और पॉजिटिव मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। हेमंत, पॉइंट को लंबा नहीं जाने देना, इतने सारे हेल्थ का भी है ना, हेल्थ भी बता दिया पॉइंट में, फिर उसके बाद आपने आई थिंक यू पुट अदर पॉइंट, नो वन स्पोक, दैट 2 डायमेंशंस बताई थी, एक हेल्थ की बताई थी और किसकी बताई थी? Education. हाँ, Education, related to education. yeah, I think it was education. I just wrote 2 dimensions and it was a lengthy point, मुझे याद नहीं, मैंने एक हेल्थ लिखा है आपका, दूसरा आपने कौन सा डायमेंशन दिया, एक ही में मत चलो। हेल्थ अकेला ही बहुत बड़ा डायमेंशन है, that people are not able to afford it out, और हेल्थ की वजह से आपने देखा होगा कि many people die in poverty due to some kind of, you can say, diseases also, right? तो हेल्थ एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उसको फॉरवर्ड लेकर आओ ना, पहले एक पे डिस्कस करो, सभी पॉइंट्स एक में बता दोगे ना। देखो मैंने एक ही पॉइंट नोट किया आपका, दूसरा भूल गई मैं, वो आपका ही नेगेटिव आ रहा है। और लंबे पॉइंट कभी नहीं, पॉइंटर्स बनाया करो कि मैंने पॉइंट्स बोलने हैं। दो चीजें मैटर करती हैं, इतना नहीं कि हम बहुत ज्यादा बोले, हम अच्छा बोले, सेकंड हो जाता है हम डिफरेंट डायमेंशंस लेकर आए, पर एक ही पॉइंट में डिफरेंट डायमेंशंस दे देंगे, बाद में अदिति टारगेट करके चाहे वो एक पे बोल दे, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद आ जाता है अदिति, यू स्टार्टेड मेंशनिंग अबाउट द कॉजेस, करेक्ट अबाउट द कॉजेस, इट वाज ओके, यू वर डूइंग गुड, आपने पहले कॉजेस का बताया, फिर आपने अवेयरनेस का बताया, वेज टू सॉल्व इट आउट, यू वर ट्राइंग टू गिव इट आउट, लेकिन पहले इट इज ऑल अबाउट, थोड़ा रुको, हैव अ डिस्कशन ऑन इट, right? When everyone speaks a lot, okay, now you come again, you speak after this, okay, so I think everyone discussed on this point, let's think about some of the causes, some of the ill effects, some of these things, okay. Let's bring into limelight some other issues also, like how we are the youth, how we are to solve this out,
आप लोगों को वही लाइंस को एक पॉलिश करके बोलना आना चाहिए, राइट? तो ये चीजें आ रही हैं। ये नहीं कि उसी टाइम पे 2 लाइनें बोली, सबने एक एक लाइन बोल दी, चलो अदिति ने नेक्स्ट पकड़ लिया। अदिति वेट फॉर इट, एग्जाम्पल्स दिए किसी ने? मैंने एग्जाम्पल बोला था स्टार्ट में, बोला किसी ने भी नहीं एग्जाम्पल बोला? हाँ, और रोल कैसे हो रहा है पावर्टी वाले पे? अभी कोरोना के टाइम पे बोल रहे थे कितने ही रोल्स थे, कैसे पुअर इफेक्ट हो रहा है पावर्टी पे। बाहर देखते हो अभी उनके पास, दे आर नॉट, दिल्ली की सड़कों पे चले जाओ, कोई रहने को मिलेगा? प्रॉपर अकोमोडेशन तक नहीं है उनके पास। ऑब्वियसली इश्यूज बढ़ेंगे, राइट? स्लेव, वो क्या कहते हैं आप, इट्स नॉट अबाउट ओनली करप्शन, यू वर टारगेटिंग करप्शन ओनली। एंड आई थिंक एजुकेशन का फी स्ट्रक्चर, पेमेंट ऑफ सैलरीज, फी स्ट्रक्चर कहाँ से आ गया? ये किसका पॉइंट था? आदित्य का ही था। इस फी स्ट्रक्चर का कैसे आ गया? Yeah, ma'am. I was taking the point of EWS. ईडब्ल्यूएस को छोड़ो, It ईडब्ल्यूएस के it सिवाय was देखो, wrong. Yeah. पुअर पे जाओ ना। पुअर Yes. का और रिच का जाना है, हमने सिर्फ ये बता रहे हैं कि दिहाड़ी वाले लोगों को और जो रिच क्लास, अंबानी क्लास, कंपेयर इट आउट, यू नो, मैसिव Yes. डिफरेंस। एक जाने को 1 करोड़ खर्च मतलब स्पेंड करके कुछ टाइम नहीं लगेगा, अदर वुड बी लाइक 1 करोड़ पूरी लाइफ की नहीं होगी उसकी इनकम। तो देयर इज अ डिफरेंस, दैट इज इनकम इनइक्वालिटी। प्रियंका चोपड़ा और हमारी इनइक्वालिटी नहीं है, क्लियर? Yeah, that was wrong. Yes. ही नहीं है, यहाँ पे कंटेंट सारा गलत जा रहा था and everyone was supporting. Hemant and Gajraj, your way was to point Aditi, you are speaking wrong in it. Let's move to the, let's do not digress. ये होता है digress करना, और यही गलती करते हो, ठीक है? आप क्या करते हो, धीरे धीरे लगता है कि नहीं मैं तो कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ और मेरा पॉइंट अच्छा होएगा और मैं सपोर्ट कर देता हूँ। You have to think about it. That shows your attentiveness कि do not digress from this topic. Let's put into what is the topic, role of effects of this. तो इफेक्ट क्या है? पहले तो इफेक्ट पे जाओ, फिर रोल क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है, फिर उसको कैसे कॉज है और कैसे हम उसको दूर भगा सकते हैं। अब क्लियर हुआ है? तभी बोल रही हूँ, कल मैंने 3-4 चीजें दी आपको, व्हेन यू आर टू स्पीक सम टॉपिक्स। अगर तो जनरिक आता है, ठीक है, जैसे हेल्थ इज वेल्थ था या कुछ ऐसे आता है, टॉपिक आता है, तो उसमें देखो किड्स का, एडल्ट्स का, गवर्नमेंट का, ये वाले इंप्लीमेंट होते हैं। जब कोई टॉपिक आ जाता है, जैसे ये था रोल का, इम्पैक्ट का, है ना, इम्पैक्ट ऑफ, सपोज करो मैं ये करूँ ऑनलाइन स्टडीज का, कुछ ऐसे आ जाता है, तो उसमें आ जाता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, ये वाले हम चीजें टारगेट करते हैं। पढ़ा था सोशल स्टडीज में, है ना? कल्चरल भी आ सकता है इसमें, रिलीजियस क्या आ जाता है? रिलीजियस कुछ बनेगा नहीं, ऑब्वियसली पावर्टी वाले में रिलीजियस का कुछ नहीं आएगा, कल्चरल का कुछ नहीं आएगा, 3 ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। तो वो आपको सॉर्ट करने पड़ेंगे कि कहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। कंटेंट गलत था, इट वाज नॉट अ गुड वन, ओके? थोड़ा और प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से, कंटेंट पे पहली चीजें डाइग्रेस नहीं करना। गजराज, योर पॉइंट्स, एक तो बहुत धीमे, इतना स्लोली नहीं बोलना, यू हैव टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, राइट? और जब कोई इट्स अबाउट समवन इज लाइक स्पीकिंग समवन पॉइंट, लाइक यू टॉक्ड अबाउट एजुकेशन अवेयरनेस कर ली है ना, लाइक यू आर टू ब्रिंग इट आउट, so you should admit it like that we have discussed, like coming to Aditi's point or something like this point. I totally agree with it, and I think that education can resolve these issues. We have to make the people aware that where there are the drawbacks. Poor लोगों को भी awareness spread out करनी चाहिए that it's not about earning more resources, it's providing one child should be there and you should provide best of the resources to there, right? उस तरह से देखो, poverty तो बहुत easy topic था, अब ये topic difficult था नहीं था, पर कंटेंट हमने सारा गलत दिया, क्लियर? तो ये नहीं है सिर्फ हम टफ टॉपिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही गलत में भी देखो। और कल से अदिति और हेमंत, योर वाज इंप्रूवमेंट, कि you were able to participate, your confidence was risen in this case, right? But Aditi, your content was wrong. तो जहाँ कंटेंट ही गलत हो गया, you understand, वो गेम ही खत्म हो जाती है। And Hemant, you Yes, were ma'am. Gajraj, it's for your first time, so I'm leaving. I'm not commenting much on you. Tomorrow it will be your turn, right? If you will go for wrong, so you will get scoldings and all that. Everything will be there. ठीक है? So it's about more of criticizing right now to you, so that you people do really good at the end. अभी जितना क्रिटिसाइज होना है हो जाओ। तभी बोल रही हूँ, अभी और टॉपिक्स जितने निकाल सकते हो, इंट्रो, फिर आपने देखना है उसकी डेफिनेशन। अब इसमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं थी, नहीं तो कल मैंने बोला था डेफिनेशन दो टॉपिक पे, ठीक है? अब डेफिनेशन की जरूरत नहीं थी, रोल की बात थी, तो रोल का आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमेशा याद रख लो कि जब भी पॉइंट करना है, इंट्रोडक्शन देनी है, तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव रोल बताना है। हेमंत, कंक्लूजन गलत था। कंक्लूजन में क्या आना था? इट वाज अ गुड डिस्कशन, बट व्हाट वी डिस्कस डिफरेंट इम्पैक्ट्स, आपने सब कुछ बताया। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड। कैसे कंक्लूड करोगे? दैट रोल, देयर इज अ एडवर्स इम्पैक्ट, द इफेक्ट्स ऑफ इट इज लाइक रियली हैविंग नेगेटिव रोल ऑन आवर सोसाइटी, and we need to eliminate, and we need to find right causes. We are the youth of India to, you can say, eliminate inequality and poverty. आपका क्या है एट द एंड? आपका एट द एंड यही है ना कि हमें इसको बाहर निकालना है, तो वो उस पर डिटर्मिन, ये नहीं बोलना बस अच्छी सी डिस्कशन होगी हम सबने दी है। एट द एंड जनरिक अपना पॉइंट देना ही देना है, तभी तो आपकी खूबी पता चलती है। इंट्रो में भी यही था,
अदिति ने भी पहले कंक्लूड करके इंट्रो देके अपनी खूबी बतानी है। शॉर्टर पॉइंट्स की तरफ जाओ, ज्यादा लंबे पॉइंट्स मत जाओ। अदिति भी लंबे पॉइंट्स दे रही थी आज, हेमंत भी लंबे पॉइंट्स दे रहा था, ठीक है। तो ज्यादा लॉन्ग पॉइंट्स नहीं है, शॉर्ट पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स, प्रिसाइज एंड कंसाइज, दैट शुड बी योर एम। क्लियर? अभी बताओ कोई प्रॉब्लम है कोई इस टॉपिक पे? अभी डिस्कशन के बाद प्लीज इस पे नोट करना। आई एम ट्राइंग टू मेक यू नोट्स। ऐसे टॉपिक्स और भी आएंगे, कल मैं कोई और टॉपिक दूंगी, ठीक है, इससे रिलेटेड भी दे सकते हैं। तो तब आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए कि मैंने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एजेस इसको पकड़ लेना है बस। इंट्रो को पॉजिटिव नेगेटिव, टॉपिक इज डन, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। कोई और आ गया, नेचर, यूथ, एडल्ट, ओल्ड एज, या आप बोल सकते हो उसको गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो हर एक में बांट दिया करो, गवर्नमेंट के पॉइंट्स को मैंने डालना ही डालना है। तो ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे। मैंने बोला था 10 पॉइंट्स बना के रखने हैं। 10 पॉइंट्स मींस 10 हेडिंग्स, 10 उसमें डिफरेंट पॉइंट्स, एग्जांपल्स देने ही देने हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स दोगे तो ही पता चलेगा रोल कैसे है। आप कोई भी अपने पुअर लोगों का निकाल देते हैं, आपके खुद के सर्वेंट्स होंगे कुछ होते हैं, या बाहर लोगों को देखते हैं कुछ भी, तो यू हैव अ क्लोज कनेक्शन। डू यू एक्चुअली सपोर्ट द पुअर क्लास? डू यू गो एंड सपोर्ट एवरी डे? You don't, we don't, right? So we are doing nothing for them. We are the youth of India and we are doing nothing for them. तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये भी बताना है, ये भी डिस्कस करना है, ठीक है। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी एनी क्वायरीज, सो लेट मी नो। ये सबको आता है? कोई क्वेरी नहीं है? Any topic, any wise you want to discuss, anything you want to know? Gajraj, you understood something? Like it was your first time, so you find it tough or it was easy? Mic is mute. I could not hear you. Yeah. प्रैक्टिस की जरूरत है अभी तक। It's all about practice. See, it's always the first one is all bad, second is all bad. Slowly and steadily you are going to win it out, right? Once you know the hack, how to solve it out, कैसे बोलना है, कैसे एंड करना है, और बीच में क्या क्या एग्जांपल्स देने हैं। ज्यादा भी नहीं बोलना है, टेल यू, जब ज्यादा बच्चे होंगे ना, 6, 7, 8, 10 आर देयर, उसमें मैं आपको बताऊंगी कितने टाइमर के बाद बोलना है, तब आपके पॉइंट्स बचेंगे। अभी तो आपके खत्म हो जाते हैं ना, तब बचेंगे, तब बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी तो बोल पा रहे हो, अभी तो आप बोलो, इट इज नॉट, देयर शुड बी अ स्पिरिट टू कट द पॉइंट। When the person is speaking, Hemant is speaking, or Aditi was speaking, Hemant, you could cut it out. Aditi, I think the point is getting digressed. Let's stick to it. Stick to the relevant one. Even those things get noted. क्या आप attentive हो कि नहीं हो, ठीक है। कल आफ्टरनून में हम लगाएंगे एक और ग्रुप डिस्कशन। एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, एनीथिंग लाइक टेक्नोलॉजी, व्हाट यू वांट टू मूव ऑन, तो मैं वो डिस्कस कर लूंगी, बताओ। और आई शुड गो विद माय फ्लो? It's better to go with your flow only, ma'am, because Okay, you don't have any idea of because topic. if we know the topics, everything we can discuss Let's more. start If we with you. don't, Any hacks like टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चाहिए, कुछ टॉपिक ऐसा चाहिए, यही टॉपिक्स चाहिए, जनरिक टॉपिक चाहिए, कोड से रिलेटेड चाहिए, कोड से भी रिलेटेड होगा, जैसे पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, वेरी नॉर्मल टॉपिक, राइट? तो कैसे, इस पे क्या करोगे? कोड्स पे भी आ सकता है। तो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, एनी ऑफ योर चॉइस। कि अभी मैं स्लोली एंड स्टेडली आई एम ट्राइंग टू गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियाज, देन आई गिव यू टफ टॉपिक्स, दैट इज माय स्ट्रेंथ ऑफ इट, राइट? Yeah. अटेंड करने पर दोनों जीडीज लगाओ, रात को भी लगाओ, मॉर्निंग में भी लगाओ। हाउ मेनी यू कुड अटेंड इट आउट? यू हैव गाइस हैव टाइम, गुड टाइम, राइट? अटेंड इट आउट और नोट्स बना लो। मैं अभी बोल रही हूँ, अभी भी बंद करूंगी सेशन में, 5 मिनट लगा के सिर्फ नोट्स बनाना। कल कैसे बोला था, आज कैसे बोला, और कल के टॉपिक में इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है? चलो, Yes. ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय। Bye.